Hello dear students, once again welcome back to you all, myself Ambujraj. Today we are going to continue our earlier section, means that part 2 for gravitation class 9 physics. Before that guys, we ended part 1, there we learned about the gravitation from the introduction, how we can define gravitation, which are the things that matters in gravitation and the universal law of gravitation. So guys, from here in this video we are going to continue from the topic weight and mass, means that how we can differentiate weight and mass. As I made already short videos there, I taught you that weight and mass are having a lot of differences between them, but then also we are going to see certain things as a short revision in this video. So first we are going to see about the definition, means that how we can define weight and mass. Weight, comma, mass. Let me see guys, are you all getting clear view? Yeah. First we are going to define both of them. Actually mass, the Hindi meaning of mass is वजन. गाइस हम लोगों ने अपने घर पे क्या सुना है कि हम लोग कई बार अपने वजन को नापने के लिए तौलने के लिए जाते हैं. एक्चुअली नापने के लिए ही, तौलने के लिए सिर्फ हमें फ्लूइड्स का यूज करना रहता है या फ्लूइड्स को हम लोग सिर्फ तौलते हैं. लेकिन गाइस कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब भी हम लोग वजन को तौलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आपको याद होगा कि हम लोग बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति मोटा है, मींस दैट उसके शरीर में मसल ज्यादा है तो उसका वजन ज्यादा होता है. या होता है कि नहीं मुझे बताओ? हम लोग कहते हैं भाई तू तो बहुत मोटा है, इतना मोटा हो गया, कितना वजन 60-100 किलो के अंदर होगा, 60 से 100 किलो के बीच में से कितना खाता है बे, ऐसे हम लोग बोल देते हैं. लेकिन देखो एक्चुअली मास का मतलब क्या होता है, वही होता है. तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो इसे हम लोग बोल सकते हैं मास इज ए टर्म विच टेल्स अस the amount of matter or particles contained in a substance. है कि नहीं? कोई अगर बंदा मोटा है, बोले भाई कितना मसल से इतना तोंद फेंक दिया है, तुम तो बहुत भारी भरकम बोझ करते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो सेम वही है भाई कि हम लोग को यहाँ पे क्या बोलना है, मास इज द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ particles contained in a substance. So we can write like that. What is mass? It is the amount of particles or matters contained in a substance or a body. Okay, इतना गाइस क्लियर है. मास का डेफिनेशन हो गया. अब इसका एक एग्जांपल देखो, हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ ए बॉय, जो कि फैक्ट है, मान के चलो बॉय. अब उसका मास हम लोग बोलते हैं भाई कितना मोटा है, ये तो लगभग 80 केजी का. सोचो 80 केजी का लड़का, क्या वो हाथी है कि नहीं है मुझे बताना. अब छोड़ो, कमेंट कर देना. लेकिन अब हम लोग देते हैं मास बाई 80 केजी. तो इसका एक यूनिट भी हमें पता चलेगा गाइस कि इसका यूनिट क्या है. द यूनिट ऑफ मास इज केजी. And now guys, in first video only I told you that there are certain different units of any a specific physical quantity. There I told you about the SI unit, CGS unit, and so many systems of units are there. So the main SI unit of mass is kg. The next thing that we are going to see about mass is that guys कि mass जो होता है वो हमेशा constant होता है. इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बताया guys, वो भी आप देख लेना. How mass is constant. तो पहला हम लोग जानते हैं mass is constant. C stands for constant. अब मास हमेशा कांस्टेंट होता है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपके साथ हूं अर्थ के सरफेस पे, मैं मून पे चला गया, मैं सन के करीब चला गया, मैं जुपिटर पे चला गया, मार्स पे चला गया, या कहीं भी मैं चला गया गाइस, मेरा जो वजन है, मास है, हमेशा सेम रहेगा. यानी अगर वह मोटा लड़का 80 केजी का तो वह सन पे चला जाए, अर्थ पे चला जाए, यूनिवर्स में कहीं चला जाए, उसका मास हमेशा 80 किलो का 80 किलो रहेगा. क्यों ना वो बाइक पे रहे, स्कूटर पे रहे, हमारा जो चीज पे रहे, एरोप्लेन पे रहेगा, उसका मास हमेशा 80 केजी का 80 केजी फिक्स रहेगा. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट मास इज गाइस दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास. एक्चुअली देखो मास का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. हाँ, मैं बार बार कहता हूँ मास का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. जैसे कि फॉर्मूला किस चीज का होता है? फॉर्मूला तो उस चीज का होता है जिसका हमें वैल्यू निकालना रहता है. मास का वैल्यू जब भी हमें निकालना रहता है तो मोस्ट ऑफ द गाइस हम लोग क्या करते हैं कि वेट से उसका फॉर्मूला निकालते हैं. देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg. M here stands for mass and G stands for universal gravitation or gravity. I told you about gravity in part 1 only. So यहाँ पर से हम लोग लिख देते हैं M इज इक्वल टू W अपॉन G. चलो भाई W के बारे में आप डिस्कस करते हैं. मास के बारे में इतना हो गया. अब नेक्स्ट थिंग एक चीज जान लो कि मास कांट बी जीरो.
एम कांट बी जीरो, इतना याद रखो, एम कभी भी जीरो नहीं होता, हाँ कभी भी जीरो नहीं होता है। एक परिंदा भी है ना, एक पंछी भी है, एक छोटी सी चींटी भी है, इवन अ स्मॉल एंड आल्सो पोजेसेस सर्टेन मास, सो वी कैन से दैट वो 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, 5 मिलीग्राम का है, कुछ का भी है, लेकिन उसका एक मास है। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई ऐसा मास किसी के पास ऐसा नहीं है जिसके पास मास नहीं है। सो गाइस यहां से क्लियर हो गया कि m कांट बी जीरो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट गाइस m कांट बी नेगेटिव, m कांट बी नेगेटिव, m कांट बी नेगेटिव। अब m नेगेटिव ही नहीं होता, लेकिन w कैसे होता है या कब होता है ये भी मैं बता दूंगा। तो इतने सारे चीजें हमें मास के बारे में जानने थे। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मास को मेजर करने के लिए कई बार हम लोग कंफ्यूजन क्या खाते हैं कि हम लोग बोलते हैं भाई चलो हम अपना मास मेजर करने जा रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं मेरा तो 50 केजी का 80 केजी का है तो मैं इतना हूं। अब देखो गाइस, जब भी हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम लोग अपने वेट को मेजर करने जाते हैं या कोई भी वेट करने को मेजर करने जाता है तो वो क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मशीन आता है ऐसा, उसमें हम लोग चलते हैं तो ऐसे ऐसे काटा इनवर्स चेंज होता है या एक जगह पे तो फिक्स नहीं रहता। एक्चुअली वो मेजर क्या करता है, एक्चुअली वो हमारा वेट मेजर करता है। बस इतना ध्यान से सुनो, क्योंकि मास को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक डिवाइस आता है, उसका नाम क्या है मैं बता दूंगा। लेकिन पहले जानो कि जब हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल केस में मास को मेजर करने जाता है तो हम लोग वेट को मेजर करते हैं, और वेट को मेजर करते हैं लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि मास तुम्हारा इतना फिक्स। कैसे देखो, एक्चुअली जब हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं तो हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा 10 ग्राम या हमारा 10 जो जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा फिक्स रहता है। यही कारण से अगर कोई व्यक्ति 80 केजी का है तो उसका वेट गाइस वेट 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 ये हमारा नेटवर्क। तो गाइस सब कुछ क्लियर है। तो गाइस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेट। तो मैंने गाइस पहले बताया कि ये व्यक्ति 80 केजी का यानी 80 केजी का वो मोटा व्यक्ति है या मोटा लड़का। तो यहाँ पर से इसका एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे हमारे दिमाग में फिक्स्ड है, सभी को पता है ये। तो उसका जब हम लोग W को वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 800 न्यूटन, और यही हम लोग जानते हैं। तो इसको बस 10 से एक्चुअली ऐसे ही डिवाइड करके फाइनली 8 केजी का मोटा लड़के के बारे में बता देंगे। तो चलो अब हम लोग डिटेल से जानते हैं वेट के बारे में। तो देखो अब डिटेल से जानते हैं हम लोग वेट के बारे में। वेट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग को क्या करना है कि वेट को डिफाइन करना है, यानी वेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मास को तो मैंने बता दिया कि उस व्यक्ति के पास कितने डोले सोले या मसल्स हैं तो उससे उसका मास का पता चल गया। लेकिन वेट क्या है, तो चलो वेट क्या होता है। एक्चुअली वेट जो होता है वो हमारा एक फोर्स होता है, इतना याद रखना। W इज ए टाइप ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स, एक वैसा फोर्स जिस फोर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड खींचा जाता है। तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या W हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की ओर अर्थ सरफेस की ओर खींचा जाता है। तो क्या W इज इक्वल टू जी, सोचो W इज इक्वल टू जी, नो। W इज इक्वल टू जी, यस और नो, दोनों कैसे है देखो मैं बताता हूं। एक्चुअली जी का दो मतलब होता है, एक तो हमारा स्मॉल जी, एक कैपिटल जी। कैपिटल जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन और स्मॉल जी हमारा ग्रेविटी। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है तो F इज इक्वल टू W, बस याद है आपको। अब आपको बोलना है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू W, हाँ होता है कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें इसको यहाँ पे G से डोनेट नहीं करना बल्कि F से डोनेट करना। F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं G M1 और M2 अपॉन R स्क्वायर, और सेम यही हमारा W के इक्वल टू भी होता है। और इसका देखो वैल्यू क्या होता है, वहां पे मैंने बताया कि उसका यूनिट था हमारा केजी, लेकिन इसका क्या होता है न्यूटन होता है। अब चलो इसे डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखना आपको, इट इज द फोर्स through which any object is attracted towards the earth। तो चलो इतना तो क्लियर हुआ कि हमारा डेफिनेशन हमें पता है वेट का। इज वेट। तो गाइस हमें तो इतना क्लियर हो गया कि वेट एक्चुअली होता क्या है, यानी वेट को हम लोग डिफाइन करने के लिए जान गए। और हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया कि W इक्वल टू mg और W इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। लेकिन नेक्स्ट थिंग जो हमें मैटर करता है कि W को वेट को मेजर कैसे करते हैं। देखो गाइस मैं बता देता हूं। एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गया या अभी तक नहीं बताया कि मास को मेजर कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि मास को मेजर करने के लिए स्पेशल डिवाइस आता है, इसका नाम क्या है, केमिकल बैलेंस। और ये हमेशा लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है गाइस। Means that we can say that in order to measure only specific mass of any body, we use a device
which is known as chemical balance. Chemical balance is only available in laboratory. We can use, but in most of the cases we use the chemical balance in our lab. The next thing is that how we can measure weight. Weight is measured by a special machine which is known as spring balance. Spring balance. Is it clear? First हमारा chemical balance and second spring balance. Confused मत होना guys. Next thing we are going to see about the weight. That is, weight can be zero. W can be zero. How? Let me tell you about it. Actually, I told you if W matters on G and M is always constant, so we can directly say that W is only dependent upon small g. Means that the universal, or we can say that the acceleration due to gravity. The next thing is that guys कि G का वैल्यू मैंने आपको पहले बताया ग्रेविटेशन पार्ट 1 में guys that G always varies. Value of G always varies from place to place. As I told you, on the surface of Earth, inside the Earth, at the sea level, outside our Earth surface, on the poles, everything I told you in part 1 guys. So in the outer space, whenever we go in outer space, there we see G is equal to 0. And during that position, you might have seen one astronaut flying in the universe. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कैसा है तुम झूठ बोलते हो, हमारा की मूवी झूठा है, हमारा कोई भी मूवी झूठा है, हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वो रियलिटी होता है. क्योंकि अगर आप एस्ट्रोनॉट बनोगे, आप फ्यूचर में जाओगे तो वहां पर क्या देखोगे, अरे मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, हाँ मैं तो स्विमिंग पूल में जैसे तैर रहा हूँ. यस गाइस, ऐसा पॉसिबल है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू 0 हो जाता है. अब जी का वैल्यू 0 तो हमारा W 0. Whenever G is equal to 0, W will be already 0. So guys, वहां पे W 0 हो जाता है. Next thing is W can also be negative. How? Let me tell you about it. Actually, guys, we knew that whenever we throw any object in upward direction, we know that whenever we are pushing or our Earth is pushing all the object downward with a gravitational force and a universal gravity or acceleration due to gravity which is equal to 9.8 meter per second square at the sea level on the surface, or we can say at approximate value we take 10 meter per second square. But guys, whenever we are throwing the object upward, at that time it becomes 9.8 meter per second square or minus 10 meter per second square because of change in direction. I already told you force is a vector quantity, hence W is also a vector quantity. The next thing is that कि हमारा W 0 होता है. कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका जाता है या ऊपर से वो ऊपर की ओर फेंका जाता है या हमें कहो कि थ्रो किया जाता है. The next thing we are going to see about their proper formula. तो फॉर्मूला क्लियर है, हम लोग क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. इतना क्लियर है तो आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस टिल नाउ. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट waste your time, go and subscribe the channel and press the bell icon also. But before guys, one thing we left, till now we left one thing. What is that? The value of W on our surrounding satellite which is moon. मून के बारे में तो हम लोग लगभग बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और जान भी जाते हैं. तो पहला हमारा कि W का जो वैल्यू होता है वो मून पे क्या होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है. चलो मैं बता देता हूँ. अगर आपने याद होगा कि when we were discussing in part 1 about the value of G on moon, there I told you 1.43 meter per second square, which is approximately 1/6 of 9.8 meter per second square, or 10 we can say directly. There I told you that guys कि ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि R स्क्वायर का डिफरेंस कैसे दिखा जाता है, क्योंकि G is equal to GM upon R square. So guys, there I told you about the difference in R. That's why the value of G is equal to 1.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो गाइस, वहां पे जब भी आपसे कोई भी पूछे कि मून पर हमारा ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो बस इतना याद रखना कि 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज दैट वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशन, वेट एंड मास. नाउ वी आर गोइंग टू सी एंड डील विथ मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड इवन इजी क्वेश्चन आल्सो. लेट्स स्टार्ट. So guys, we are going to see our first question, that is why is it easy to work out on moon as not on earth. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अभी राजू श्रीवास्तव जो कि बेचारे काफी अच्छे कॉमेडियन एक्टर थे, वे अभी
हार्ट अटैक से प्रॉब्लम के कारण अभी हॉस्पिटल में है गाइस। आपको पता है ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि वे हेवी वर्कआउट करते थे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के डोले सोले दिखाने के लिए हम लोग काफी वर्कआउट करते हैं। एज वी आर गेटिंग और कमिंग इन द स्टेज ऑफ पॉवर्टी और टीनेज, वी ट्राई टू improve our muscles. So guys, the next thing is that we all are doing heavy workout, means that we all are lifting so weightful mechanism or devices in order to increase our muscles, biceps and triceps. The next thing is that why is it easy to work out on moon as not on earth? Because ये हमेशा याद रखना, because W is equal to 1/6, W on moon is 1/6 on earth. That's why suppose one machine or one weightlifting machine, we know that weightlifting machine are like that like this, not approximately but maybe like this only, and this possesses a weight of 1000 Newton, which is equal to 100 gram on our earth. As we know that I told you the value of G is equal to 10 kg, 100 kg guys. Yeah, I told you that G is equal to 10 meter per second square, that we already knew it. So guys, but that's because of that reason only. Suppose this is of 100 Newton on 1000 Newton on earth. So what about its value on moon? 1000 upon 6, what we get here? 1, then again 4, 46, 36, again 4, 0, 166.40. So 166.6 Newton. So guys, you can think what is its value on moon. Suppose guys, देखो 1000 or 166.6. Because of this heavy difference, the weight is very less over there, so is it easy for us to lift workout on moon as compared to earth. So we are going to see next question guys. Let's start. So guys, we are going to see our next question, which is mass of an object on earth is 10 kg, find its weight on moon. So guys, in order to solve this question, we need to go for W on earth, then only we can directly find out by dividing from 1/6, then we will get the approximate value of the weight on moon. So W is equal to mg, so we have to multiply like that only. 100 Newton we will get, as we know that G is equal to 10 meter per second square and our mass is 10 kg. So finally we will get here 100 Newton. So we have to write W on m, means moon, then we have to just divide it 100 upon 6, then we will get here the same value 166.6 something. Okay, so we got the value 16.6 Newton, which is the weight of the object on moon. So guys, from here only we discussed all those things. Now we are going to start our next concept regarding to pressure and thrust. So guys, before starting this topic pressure and thrust, we need to know something basic thing. चलो गाइस, प्रेशर के मामले में हम लोग क्या बोलते हैं, सोचो कुछ क्या बोलते हैं. सपोज दैट एक हमारा पाइप, जो कि एक स्मॉल पाइप है, दैट वी यूज फॉर, as we know that one tank which is always available in our houses, it uses a small pipe, or we can say that a pipe of thicker or thinner in nature. The internal thickness is very small as compared to one pipe we use for irrigation facilities in our field. So guys, आपने कभी नोटिस किया है कि whenever we are releasing the water from both the pipes, the distance covered by the small pipe is much more than the distance covered by the larger pipe. देखो गाइस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल पाइप का प्रेशर जो है वो ज्यादा लगता है. अब क्यों लगता है, आपको याद है कि उसमें हम लोग देखते हैं काफी उसका इंटरनल थिकनेस इतना कम है, तो इसका सरफेस एरिया कितना बहुत ही कम है. अब इतना कम होने के कारण इससे जो पानी का जो प्रेशर निकलता है वो काफी ज्यादा हो जाता है. यानी इतना तो क्लियर हो गया कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता मेरा प्रेशर. अब सेकंड थिंग हम लोगों ने देखा, उसका इतना ज्यादा, इतना थिक है वो. अब इतना थिक है तो तुम ही बताओ, इतना थिक रहेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. So guys, from here we got the value that pressure is inversely proportional to area. चलो भाई, इतना तो सभी को पता हो गया, मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू. वी क्लियर्ड अबाउट दिस टू टॉपिक्स. द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन डिफाइन प्रेशर. So let's start and define pressure. Pressure is nothing but it is something physical quantity which tells us how much force is applied on per unit area. So we can say it gives the value about how much force
is applied on unit area, there are so many ways through which you can define. It doesn't matter you have to follow my definition or no. As I already told you, we are making definition from our own mind, from the things that we understood, from that only we are making, not that the book language. Oh, what is pressure? Pressure is the force applied per unit area. Oh, over. No, guys, we are not following that book process, or we are not becoming book pets. We are using our common sense and we are trying to improve our knowledge. So guys, next thing is that how we can find out the value of pressure. P is equal to F upon A. By the definition we got P is equal to FA. So here we got that P is directly proportional to F, as P is inversely proportional to 1 by A. So guys, the next thing, the value of P. P का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? देखो P का वैल्यू क्या होगा? F is denoted by Newton and A is denoted by meter square. So we got here Newton, meter minus second is known as another unit Pascal. Why it is known as Pascal? Because you might be knowing about one scientist Pascal, who was very famous for most of his physical theories. He published so many theories, guys. One of his theories is Pascal theory. And let me tell you about the Pascal theory. Actually, during a time when at one time Pascal, I'm getting confused. Wait, guys. Yeah. At a time, you might be known that once upon a time, Newton was bathing under a bathing tub. He saw that when he bent under the tub, the area increased. That we will tell about Archimedes principle later. Actually, Newton also gave certain theory regarding to that, but most of the theories regarded to the extension or the displaced water weight is discussed by Archimedes, so we will see later. But the next thing is that, guys, how pressure changes, which is the factor which very matters in case of pressure. So guys, as one particular video only I made, that pressure always increases when height decreases. So pressure is inversely proportional to height. This much thing that we have to study regarding to pressure. Now we are going to enter on another thing, which is our thrust. But before that, guys, let me tell you certain physical phenomena जिससे आपको क्लियर हो जाए. चलो एक एग्जांपल आप देखो कि मेरे पास ये डस्टर है. Suppose that I am holding this duster. You might be seeing, okay, clear view, okay. Are you getting all clear vision, guys? Please comment in the comment box section. Now let's see the pressure difference that I will face on my hand. Suppose that, guys, I am putting this duster like, oh, it is very difficult to hold, man, but let me manage it. Okay, I'm trying. I will get it. Okay. Oh. So guys, suppose that I'm holding this object and it is getting, like this I'm holding. So you might be saying that, is it providing more pressure or less pressure? Here we can see that it is providing more pressure. As for proper value, we have to use, or we have to go for scientific lab, because in laboratory only we can get the proper view. But I can feel, guys, that's what I'm telling you. And here we can see that I'm getting less pressure, and even it is also comfortable for me to hold this duster. The reason is why? Because of the surface area difference. In both the cases, I am holding this duster, but here you can see that the surface area or the contact of the duster and my hand is very less in first proper way, or in first example. That's why I'm getting more pressure. So guys, from here we have confirmed that what is pressure. Now we are going to deal about thrust. So let's start. So guys, we are going to deal about thrust. What is thrust? आपका matter आ रहा होगा कि how we can define thrust. But before defining anything, we have to go through the concept, or we have to learn something about it. Then only we can define easily from our own way. चलो thrust का एक example देता हूँ. Suppose that, guys, मेरे पास अभी मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, आपको साथ अभी मैं हूँ. तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? I am going to push this board. चलो इसे धक्का देते हैं, देखते हैं ये कितना पीछे जाता है. पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं. I am pushing this board. I am applying what? I am applying force on this board. Am I applying force from this direction? Am I applying force from this direction? No. I am applying force directly on it, and I am seeing that this board is getting somewhat displaced from its position. Or look that, suppose that I am holding this marker. I am applying force on this marker, and
I'm getting that this marker is not getting displaced from its position. Why? Because this marker is of solid, and solid possesses high intermolecular space. That limit we have to study in chemistry. But the main thing is that how we are applying our force. We are applying as a directly, or we can say that in a right angle manner, or I am saying that we are applying as one directly, or we can say that perpendicular manner. Because let me tell you all about that. Suppose this is our board. I'm applying force from here because we can't donate this properly, because the shape we are using is two-dimensional shape, and through two-dimensional we can't draw clear. But you have to remember is that I'm applying force on this particular board. तो बोर्ड का अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन आता है, इसलिए बता रहा हूँ कि थ्रस्ट लॉन्गिट्यूडनल या परपेंडिकुलर फोर्स को क्यों बोलते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ. देखो अब जब भी इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं इस साइड से कर रहा हूँ या इस साइड से कर रहा हूँ, नहीं, मैं इस साइड से भी इसे पुश कर रहा हूँ. तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा हमारा शेप है, यहाँ पर से हमारा ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है. एंड दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नोन एज थ्रस्ट. क्लियर है आपको थ्रस्ट क्या होता है? तो चलो इतना तो हम लोग जान गए. अब हाउ वी कैन डिफाइन इट. द परपेंडिकुलर फोर्स through which or the perpendicular force acted on any object is known as thrust. So clear guys? The perpendicular force acted on any object is known as thrust. तो चलो एक चीज और आपको कंफ्यूज आ रहा होगा कि क्या सभी फोर्सेस थ्रस्ट होते हैं? आ रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ऐसी बात है सभी थ्रस्ट हो जाते हैं और सिर्फ वो 90 डिग्री का नहीं होना है. तो चलिए इसका मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अर्थ, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. वहां पे W क्या है? फोर्स है. आपको पता है कि वो फोर्स है. तो क्या वहां पे थ्रस्ट है? बताओ. ये भी आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या हमारा W कैन बी टर्म्ड एज थ्रस्ट? आई नीड दिस आंसर in comment box section, or I will reply it at the last of this video guys. So before that, let's see the proper formula of thrust. T is equal to F. So T can be termed as, or from here we can find out pressure is equal to thrust upon area. The same thing we can use, or we can say T is equal to PA, pressure into area. The same value of also Newton only. The value of the SI unit of thrust is न्यूटन. सो गाइस इतना तो क्लियर होगा कि थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या. देखो थ्रस्ट का एग्जांपल से पहले मैं आपको दो चीज और बता दूंगा. In this video we will not discuss about Archimedes principle, because Archimedes principle itself is a vast topic. For that we need to go for another video. As I told you, there when we will start Archimedes principle, no, we will see only numerical questions. So अभी आपको क्या करना है? Now you have to, I will upload Premiere. You have to go and press the bell icon for getting notification of that part 3, where we will see only numerical questions with Archimedes principle. Because in most of the books you do not get these all topics regarding to numerical value. Most of numerical value क्या होता है? फोर्स इतना, प्रेशर इतना, बताओ हमारा एरिया क्या है, यही सब पूछ के छोड़ देता है. लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं, एक चैप्टर होता है हमारा फ्लोटिंग बॉडी. फ्लोटिंग बॉडी, when we go for floating bodies, this is actually a type of chapter with that we see most of the competition type of questions. Competition questions. As we already knew that today is the world of competition. Who is not studying? You only tell me. We all are studying. For what we are studying? In order to achieve something, not in order to get something. But the main concept we have to follow is that we have to learn something. Okay? So from here only we are going to leave this video, but before that let me tell you one question regarding to pressure. So pressure और thrust से एक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे. Suppose one object is possessing the force or thrust of 10 Newton and surface area is given 5 meter per second square. So find pressure. So pressure equal to what? The same thing we have to apply 10 Newton upon 5. So we will get 2 Pascal is the वैल्यू गाइस. तो इतना तो क्लियर है. अब देखो कुछ एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल हम लोग को लाइफ में देखने को मिलता है प्रेशर से रिलेटेड, ये हम लोग जान लेते हैं. एक्चुअली देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं आपके हाथ के ऊपर कांटी से वार करूं, हे मजाक से कर रहा हूं, रियलिटी नहीं है. सपोज दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स थ्रू वन नेल ऑन योर हैंड, यू माइट गेट, ओ माय गॉड, you made a hole in my hand, oh I'm getting too much pain. This is what your reaction. But suppose I'm applying, or I'm having a bundle of nails, and then only I'm going to apply
on your hand, you may not get that much pain as in first situation. Why? Because in the first situation, we saw that the force or the whole thrust was applied by me on your single small tip of the area of that nail which was in contact with your hand. But in next another situation, we saw that when we grouped so many nails, and when I hit that nails on your hand, you got certain few pain as compared to in first situation. Why? Because of the pressure difference. In first situation, we saw that the whole force was applied on a small area, but in second situation, we saw that the whole force was divided on the surface area. The next thing is that, guys, you might have seen why we are using a knife which is sharp in the shape, and from that shape only we are cutting the things that we use instead of that part where it is blunt. The reason is that you might seen that the sharp area of the knife is having thinner shape, or we can say that it possesses thinner area, and because of that thinner area we are getting enough to apply our large pressure, and because of that large pressure it gets cut easily. And even in our school bags also we are possessing large straps because of reducing the pressure, so that we can easily take out our bags, or we can easily take our bags from a school to our home. So guys, here only I am going to drop our video. But guys, I already told you, if you get anything to learn from our channel, because our channel is only based on foundation level, as I told you, our channel is possessing so many groups where we are discussing about questions, we are providing figures, numerical questions, numerical theories also, diagrams also. Through that we are helping all those students. If you are getting anything to learn, please subscribe our channel, join the Telegram channel. Thanks for watching this video. Have a nice day to all. If you are not liked that video till now, go and like this video. And if you are having more doubts, go and ask in the comment box section. Have a nice day to you all.